Hello everyone, good morning. Today we are starting with our next topic, next chapter of the class 9 physics under gravitation. Okay, then in last previous classes we discussed their force and laws of motion, and before this one we discussed their motion. So today we are starting our next chapter, gravitation. Before this one we should know about what is gravitation word. Gravitation bit are related to our force only. We discussed their different type of the force in our nature is acting there. So fundamental forces, this is the one force which is fundamental in our nature. Four fundamental forces are there: electromagnetic force, that gravitation force, strong force, and weak force. Out of these four forces, one is our gravitation force. Okay, so this one here, gravitation is not only for our earth only, that is a universal word. कंप्लीट यूनिवर्स में ये एक्ट होता है. ओके, दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग इट्स ऑन ग्रेविटेशन. खुद का क्या होता है, सबका जिस पूरी बॉडी का मास है सबका क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है. एंड दे कैन बी अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ बट डिपेंड अपॉन द मास. ओके, आवर ऑल्सो अर्थ ऑल्सो हैविंग ग्रेविटेशनल फोर्स and another planet also having gravitation force, but they are not attracting with each other because having different gravitation force and they are the revolving surrounding the sun. फिर भी क्या है, सबका ग्रेविटेशन फोर्स होने के बाद भी क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, कॉन्टिन्यूसली क्या सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं. बिकॉज हेयर फॉर बैलेंसिंग दीज फोर्सेज अनदर फोर्स विल बी एक्ट, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट्स व्हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज फोर्सेज, बैलेंसिंग ऑफ दीज फोर्सेज, दे आर द रिवॉल्विंग सराउंडिंग द सन, दे आर not colliding with each other. So gravitation, first time this one gravitation is told by their Newton only, that any object we are falling then always will become downward only, not going in upward. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रीली लीव करते हैं then after the leaving then it will become downward. लीव करने के बाद वो नीचे ही आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि अर्थ का क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड होता है. मून का भी ग्रेविटेशन फील्ड होता है बट इट इज अ लेस एज कंपेयर टू दी अर्थ. ओके, अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो फील्ड लगेगा, ग्रेविटेशन फील्ड लगेगा, वो हमारा क्या है, अर्थ की वजह से ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू दी अनदर प्लैनेट्स. दैट्स व्हाई दे आर कमिंग टुवर्ड दी अर्थ सरफेस ओनली. तभी ये क्या है, सभी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ ही आके गिरते हैं. इफ यू वांट टू टेक आउट दीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी अर्थ एटमॉस्फेयर, अगर ऐसा है कि आप चाहते हो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ही निकल जाए, सो there is a one minimum velocity required to eject any object that they will come out from the earth atmosphere, that is known as the escape velocity. Okay, उस velocity को क्या बोलते हैं, escape velocity. कि इस velocity की वजह से क्या है, कोई object क्या है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा, वो कभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करेगा in field of the gravitation. Okay, so this one velocity is known as the escape velocity. Escape means निकलना, बचना. Okay, so due to this one velocity, that's 11.2 kilometer per second, by this velocity we are throwing, then object will be never come back on the earth atmosphere, earth surface. That is known as the escape velocity. So we are talking about the gravitation. Gravitation is told by the Newton. Okay, इसने बताया था इसके लिए फर्स्ट टाइम न्यूटन ने. क्लियर, क्या कहा था कि दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड दी अर्थ ओनली, सो दैट ग्रेविटेशन फोर्स it is a force which is acting between two massless body is known as gravitation force. ग्रेविटेशन फोर्स. ओके, तो फोर्स का क्या होता है बेटा, दो टाइप का नेचर होता है. फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव. बट जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो क्या कहता है कि दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर. इट्स नेचर इज अट्रैक्टिव ओनली.
क्लियर। अगर दो मास है, देयर m1 एंड देयर m2, वी आर कीपिंग दीज टू ऑब्जेक्ट विद सम डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, कि दोनों एक दूसरे को दूर नहीं भगाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सो इट्स नेचर विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर रिपल्सिव नहीं होता, बिकॉज एज वी आर लिविंग एनी ऑब्जेक्ट दे विल बिकम toward the earth surface only, that's why it is attracted by the earth only, its nature always will be attractive only. Okay, so this one is a inversely proportional to distance, as we are going away from the point then this distance, अगर दोनों डिस्टेंस, दोनों पॉइंट को, दोनों मास को अगर दूर लेके जाएंगे तो फोर्स कम होगा, अगर पास लेके आएंगे तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। Okay, next property you can write there, it is central force, it is सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है कि दोनों जो फोर्स लगता है दोनों के सेंटर की तरफ लगता है, दैट इज फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस मासेस बॉडी, दैट इज नोन एज द सेंट्रल फोर्स। ओके, एंड नेक्स्ट विल बी इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स, इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स। ओके, लॉन्ग रेंज का मीनिंग क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या है, ज्यादा डिस्टेंस तक रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर दो चार्ज, दो मैग्नेट अगर रख रहे हैं, मैग्नेट को अगर हम यहाँ रख रहे हैं, देन दे विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्ट और रिपेल, बट एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे जैसे उनको दूर लेते जाएंगे तो उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, डिक्रीज होती जाएगी। अगर आप यहाँ लेके आओगे तो आप देखोगे कि दोनों में कोई रिपल्सन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही, मीन्स नो रिपल्सन नो अट्रैक्शन, दैट मीन्स देयर इफेक्ट विल बी टिल हियर ओनली, उनका इफेक्ट सिर्फ यहाँ तक है। बट आपका ग्रेविटेशन फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, लंबे डिस्टेंस तक होता है, कि अगर 3 टावर से भी कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं वो भी क्या आता है, नीचे की तरफ ही आता है। क्लियर, तो इसकी वैल्यू तो कम होती है, बट इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, लंबे डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस तक होती है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसलिए इसके बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस। Next, so this one force will be your attractive force between two masses body. How we can find this one force? इस force को हम find कैसे करेंगे? That is known as the magnitude of this one force. We can find there by using their universal law of the gravitation. First one, your universal law of gravitation. कि फोर्स जो लग रहा है बिटवीन टू डिफरेंट मासेस बॉडी, दिस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, हाउ वी कैन फाइंड बाय यूजिंग देयर यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, दैट इज गिवन बाय द न्यूटन ओनली। न्यूटन ने ही बताया था, इसने क्या कहा था, दैट फोर्स इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, not electrostatic gravitation, is product of two masses and inversely proportional to square of distance between them. Okay, this one known as the universal law of the gravitation. Universal law of gravitation क्या कहता है, if we are taking a two masses, so here we are writing there, consider
consider two masses m1 and m2. ओके, क्या हमने दो मास ले रखे हैं m1 एंड m2 एंड m1 m2 and distance between them is r. ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है. सो हियर वी आर राइटिंग देयर लेट टू masses are there, one is m1, second is m2. लेट वी आर assuming distance between them is r. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, सो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट we can write it f, we can write there directly proportional to the product of these masses and inversely proportional to the, according to this law f will be directly proportional to these masses. कौन से masses, one mass is here and second mass we have taken here, so distance between them r is taken. So we can write directly proportional to the mass m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance between them. इन दोनों के बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर टू फैक्टर विल बिकम, वन इज दिस वन, सेकंड फैक्टर इज दिस वन. सो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन first and second, so we can write there f will be directly proportional to m1 m2 divided by r square. Okay, this is the force to find out, this is the relation Coulomb's that is universal of the gravitation used to find out the gravitation force between two masses body. So this one here proportional sign, then here need to remove this one, then we will bring equal sign, then that's why we will take a one constant, कन्वर्ट दिस वन इक्वल साइन. तो इसको कन्वर्ट करके क्या पे हैं, हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे, जिस कांस्टेंट का वो हम बोलेंगे ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. सो हियर वी कैन राइट देयर gm1 m2 बाई आर स्क्वायर. तो ये क्या आ गया, हमारा मैग्नीट्यूड आ गया ऑफ दिस फोर्स, कि ये दो अगर मास है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, दिस वन मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू gm1 m2 बाई आर स्क्वायर. और ये क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज आवर वेक्टर क्वांटिटी. इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड दी mass. Okay, that is attractive nature. So here gmm by r square, where g is our universal gravitation constant, universal gravitational constant. जी क्या होता है, हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है. r इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू gm1 m2 बाई r स्क्वायर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. सो this one our law of the universal. So let we are doing a common question. If mass of object A equal to 10 kg and mass of another object (30 kg) kept at a distance दोनों को क्या है 50 मीटर डिस्टेंस पे रखा, kept at a distance 50 मीटर, then find gravitation force between them. क्लियर? तो कह रहा फाइंड करो दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा.
फर्स्ट वी विल सी देयर विच टर्म्स आर गिवन. ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है ए और बी. ओके, अनदर ऑब्जेक्ट बी, ए एंड बी, टू मास गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन देम आल्सो गिवन. तो ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. और फोर्स कौन सा लगेगा, अगर मास है देन बिटवीन देम देयर ग्रेविटेशन फोर्स विल बी देयर. हियर वन मास इज दिस वन, here 10 kg, e object is there, another object is b, and here mass is your 30 kg. इन दोनों का मास क्या गिवन है, ये गिवन है, और इन दोनों का डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर. डिस्टेंस क्या गिवन है, 50 मीटर. क्लियर. तो ये कह रहा है कि फाइंड देयर फोर्स. तो फोर्स के लिए फर्स्ट वी विल राइट देयर गिवन टर्म्स. सो हियर वी कैन राइट देयर m1 इक्वल टू आवर गिवन 10 kg, m2 इक्वल टू आवर 30 kg. क्लियर. एंड आर इक्वल टू गिवन है आपका 50 मीटर. 50 मीटर डिस्टेंस इज गिवन. सो ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू आवर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. I thought you can find beta, put value of given terms, then your force will be there. और force की यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन ओनली. क्लियर. सो हियर वी कैन राइट देयर g into m1. m1 equal to your 10 and m2 will be your 30 divided by your 50 का square. So here will become 10 300 g divided by your 25 00020325 universal gravitation constant. Its value will be equal to 9 into 10 raised to power 9, that is gravitation constant. So it will be this one Newton. So I hope you understood beta how we can find this one gravitation. So gravitation force is our universal force which are acting between the different heavily mass body, not only for our earth, that this one here for only कंप्लीट यूनिवर्स. यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, सबका क्या होता है, जिसका मास होगा तो उसका क्या होगा, अपना ग्रेविटेशन फील्ड होता है, जिसकी वजह से क्या लगता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं. ओके, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशन फोर्स. Clear. So this one force we can find by using its magnitude, we can find with the using by universal law of the gravitation. Universal law of the gravitation क्या कहता है, that force will be directly proportional to the product of two masses. जिनके बीच में जो force लग रहा है उनके product के directly proportional and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, दोनों के बीच का जो distance है उसके square का inversely proportional रहेगा. So as we are merging these both equations, then our formula will become that is F equal to g m1 m2 by r square. Okay, so this one here gravitation force. Next will become here one more word, that is the acceleration due to gravity. G will be there. Acceleration due to gravity क्या होता है बेटा, that is the acceleration by which any object is moving here and there under the effect of the gravity, अर्थ की gravity की वजह से. Clear. For example, this object is here. ये object इधर उधर move कब कर सकता है, if we are applying the force on it. जब हम इसके ऊपर force apply करेंगे then it will be shift here and there. But if I am leaving like this one vertically, if I am leaving this one, what happened, without any force it will be move downward only. ओके, बिना फोर्स के क्या नीचे की तरफ जाएगा, तो उसका रीजन क्या है कि अर्थ की फोर्स की, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो ड्यूरिंग दिस वन मोशन दैट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल. Free fall means without any external force any object is falling under the effect of the gravity, that we will call it free falling. So during the free fall case, then body is accelerating by which acceleration, then we will call it acceleration due to gravity, small g we will there. So the relation between them, small g, we will find there in next class, g m by r square. So how this one we can solve this one we will discuss in our next class. Thank you for today our video.